Okay. In the last day, the previous lecture, we started with cancer. Yes or no? Yes. What is cancer initially? Boys. Uncontrolled, abnormal, unnecessary division of cells results in formation of a collection of cells which is called as tumor. Yes or no? Yes. Tumor may be classified either into a benign variety or a malignant variety. Benign variety is usually non-cancerous, it is harmless. While the malignant variety is cancer itself, it is harmful, it may spread from one part to another distant part. Yes or no? Yes. And a completely distant part, it can spread to other parts of the body by the process called as metastasis. By the process called as metastasis. Metastasis. Secondly, the benign tumor, क्या problem है बेटा? सुनी बेटा? क्या problem है? Benign tumor usually remains localized. They stay in one part itself. They never spread. The most common thing a benign tumor can do is pressure effect. एक जगह जमा है तो वो उस पार्ट को कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से हल्का पेन है. लेकिन अगर benign tumor ब्रेन में है तो it will compress the brain parenchyma. Yes. There it will be harmful. A benign tumor in your eyes, it will be harmful, but otherwise per se it is harmless. If it is in an important organ, as in brain, heart में कोई tumor नहीं होता है, except for myoma. So benign tumor is harmless first, but by pressure effects, it may become harmful if it is in brain. That's it. Malignant tumor, they spread, they are harmful, they are cancerous, they spread from one part to completely distant location by the process called as metastasis. The cell morphology in a malignant tumor is very haphazard. Haphazard समझता है ना? हाँ, मतलब क्या है haphazard का? Anyone from Oliver? Anyone from scholars? Scholars, raise your hand. Okay. Anyone? Haphazard का meaning? Haphazard का meaning? नहीं पता? तो कल से क्या सुन रहे थे? सर ने भी बोल दिया बस. बोलो बोलो. Haphazard. They know haphazard का meaning है ill-defined, जो proper नहीं है. आप घर में आपके कपड़े कैसे रखते हो? गोल 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 ऐसे करके. That is haphazard array. समझा? Which is not proper, ill-defined, ill-differentiated. समझ में आ गया? इधर आपने देखा भी ना कि यहाँ पर अगर आप सेल मॉर्फोलॉजी देखोगे तो बहुत ill-defined है, बहुत ill-differentiated है. प्रॉपर है क्या? वहां पर देखो. समझ में आ गया? Okay. Then we saw the types of cancer. There are basic 4 types of cancer, but your text says 5. The first variety is carcinoma, which is the most common type of cancer which you will encounter anywhere in your life. The first is carcinoma, which is a cancer of linings, epithelial linings. Cancer of any organ lining is carcinoma. Skin cancer, carcinoma. अभी bladder cancer, bladder की lining का जो cancer हुआ, that is carcinoma. लेकिन bladder के detrusor muscle के third layer का हुआ, that will be sarcoma.
Because sarcoma is a cancer of connective tissue including bones, muscles, cartilages, tendons, etc. समझ में आ गया? The third variety was leukemia. Leukemia is nothing but blood cancer whereby the blood WBCs, that is the leukocytes, the number of leukocytes rises up to 1,000,000 and stays for 1,000,000 for constant 3 months without any downfall. समझ में आ गया? Okay. Then we saw lymphoma, which is a cancer of lymphoid tissue. Ideally, lymphoma indicates tumor of your lymphoid tissue. But only lymphoma is a special variety of the cancer which involves the lymphatic, including your spleen, including your thoracic duct, lymphatics, lymph nodes. समझ में आ गया? Example: Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma. Leukemia हो गया. And the last one was adenocarcinoma. What do you mean by the term adenoma? Adenoma means a tumor of a secretory cells. A cell which is secreting something. बस उसका ट्यूमर हो गया एडिनोमा. अभी वो स्किन का स्वेट ग्लैंड ही क्यों ना हो, अगर उसका ट्यूमर है, you will label it as adenoma. Adenoma means tumor where the cells have secretory capacity. They are secreting something. The adenocarcinoma is cancer of glandular tissues or cancer of cells which have some secretory capacity. समझ में आ गया? Example is pituitary adenocarcinoma, thyroid adenocarcinoma, adrenal neoplasia, etc. Causes of cancer: nicotine, caffeine, vinyl chloride, etc. Radiations, cosmic rays, all and every sort of rays. Beyond its normal values, it is harmful. अभी आप ये नॉर्मल लाइट भी देखिए. सपोज ये अगर आप कभी शादियों में इतना बड़ा बड़ा लाइटिंग चलती है उसके सामने जाकर के खड़े हो जाओ. पहले के टाइम पे ना, जब आप बहुत छोटे हो गए तो एक आता था जिसे हम कहते थे फोकस. अभी वो थोड़ा इम्प्रोवाइज होकर के आने लगा. उसके सामने अगर कोई खड़ा रहे ना, वो शॉर्ट जल जाता, स्किन सीधा बर्न हो जाती. अभी वो बहुत इम्प्रोवाइज होकर आने लगा. तो जस्ट इमेजिन दिस लाइट, even the light rays can cause injury and death. वो इम्प्रोवाइज होकर के अभी एलईडी हो गई. ठीक है? Viruses, there are certain oncogenic viruses. Example: Epstein-Barr virus and human papilloma virus. Oncogenes, there are certain oncogenes, proto-oncogenes, which makes you vulnerable, which increases your proneness, which increases your chance to become cancerous. If you have a positive history, if you have a positive family history of cancer, there are 80% of the chance that you may have that particular proto-oncogene, and that proto-oncogene will get activated, will become dominant under special circumstances, and you will end up into cancer because of your lifestyle habits. That's it. This is primary prevention. जैसे आपको पता है कि your mom is diabetic, your dad is diabetic, your grandmom is diabetic, your grandfather is diabetic, your maternal grandfather is diabetic. You are 99% prone to become a diabetic. So what you will do? होने से पहले ही weight loss management, exercise, balanced diet, exercise, higher of age diet, etc. So similarly, if you have a history of cancer, to prevent ending up into cancer, you can involve certain lifestyle changes. As in, stay away from tobacco, stay away from coke as well. Addiction in any form,
smoking, smoking, shisha, and what not? Any sort of addiction. Acha. Treatment of cancer, 5 modalities: chemotherapy, radiotherapy, surgery, immunotherapy, and supportive care. I hope you remember. Yes. क्या हो गया? AIDS, we started up with AIDS. AIDS is a disease which is caused by HIV. HIV is a retrovirus. Retro मतलब पीछे जाना. Okay. Normally, what happens is from DNA is transcribed into RNA, and RNA is translated into proteins. Central dogma theory. 20 ribosomes आते हैं ना, 20 और 50, तो 80 बनता है. Anyways, so normally the procedure is from DNA you get your RNA, from RNA you get your proteins. Yes or no? But this particular type of retrovirus which has an RNA as a genetic material. See, we classify bacteria into whether it is aerobic, whether it is anaerobic, whether it is lactulose positive, mannose positive, वगैरह वगैरह. But we classify viruses whether they have DNA as a genetic material or RNA as a genetic material. Well, if they have DNA as a genetic material, whether they have single-stranded DNA or double-stranded DNA. If they have RNA, whether they have single-stranded RNA or double-stranded RNA. So this particular type of virus has single-stranded RNA as a genetic material. First. Second, it has a special enzyme called as reverse transcriptase. Which enzyme is utilized to produce DNA from RNA, which is very far away from the normal procedure. समझ में आ गया? Parents से child होते हैं और child से फिर उनके child. This is a normal procedure. Child से parents possible? ये कर सकते हैं. समझ में आ गया? नहीं समझा? Improve your level of sarcasm. Now, just look at the structure of HIV. You will find out that the genetic material is enveloped into 3 sorts of layers. You have 2 single-stranded RNAs over here, an enzyme enveloped into a capsid protein. Capsid protein. Capsid बोलोगे तो बाहर की लेयर होती है. Capsid protein. Okay, which is further enveloped into one more layer, which is called as matrix. This is again enveloped into a layer having glycoproteins, which is labeled as GP50, GP40, GP121, etc. This additional layer, which has the glycoproteins, helps the virus to adhere to your immune cells. It helps to anchor to your immune cells. Once the virus anchors and attaches itself to the immune cell, it injects its genetic material into the host cell, host immune cell. मतलब आपके सेल से वो पहले अटैच होगा. अटैच किससे होगा? GP40, GP121. अटैच हो गया, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डाल दें. अब सेल के अंदर, तो सेल का न्यूक्लियस होता है. सेल का न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए होगा, न्यूक्लियस होगा. Yes or no? So what this virus will do is utilize its reverse transcriptase enzyme. सेल का डीएनए साइड में रख दो, खुद का अपना नया डीएनए बना. कैसे? आरएनए से बनाएगा डीएनए using this enzyme reverse transcriptase. और फिर डीएनए बन गया तो सब कुछ है. डीएनए से हर तरीके का प्रोटीन्स बनेगा. और जब प्रोटीन्स बन गए तो सारे एंजाइम्स आपके अंदर में, वो लाइसोजाइम एंजाइम ही क्यों ना, है ना?
Modes of transmission: unsafe sexual contact, including oral, vaginal, and anal sex. Blood through blood transmission or needle sharing, usually seen in druggist and addicted individuals. From mother to child, transplacentally. अच्छा. Body secretions, including tears, saliva, vaginal secretion, seminal secretion, including the breast milk, contains viruses. But if the sweat comes in contact with your body, which is fit and fine, कोई इंजरी नहीं है आपके स्किन को, तो आपको एचआईवी होने वाला नहीं. लेकिन अगर इंजरी है तो हो जाए. इंजरी से कांटेक्ट में आया तो हो जाए. समझ में आ गया? एंड इनिशियली, अभी तो नहीं, पहले ट्रांसप्लांटेशन में बहुत कॉमन था. अमिताभ बच्चन का स्टोरी पता है? क्या पता है? नहीं पता. कूली मूवी की शूटिंग में he got injured and the left lobe of the liver पूरा खत्म हो गया. He was admitted in just किसी फिल्म से लिखा है. तो अभी उनका लिवर पूरा खत्म हो चुका था. तो किसी फैन ने लिवर डोनेट और वो ट्रांसप्लांट कर दिया. लेकिन बाद में पता चला कि the fan was hepatitis B positive. तो अमिताभ बच्चन right now is hepatitis B positive already. तो ये ट्रांसप्लांट अब तो इतना नहीं होता है, लेकिन ये पहले बहुत कॉमन था. इसके लिए ब्लड को 2 बार चेक किया जाता है. ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट से आप ब्लड लोगे और एक नॉर्मल पेशेंट को दो. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. एड्स फुल फॉर्म क्या था? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. सिंड्रोम मींस कलेक्शन ऑफ साइंस एंड सिम्पटम्स. कलेक्शन ऑफ साइंस एंड सिंड्रोम. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट साइन एड्स का ये है कि कोई साइन नहीं हो. स्पेसिफिक साइन नहीं. You may find a joke or something, but it is very deadly. आपको पता ही नहीं कि आपका दुश्मन कौन या है भी. It becomes very difficult to diagnose a patient with AIDS until and unless blood investigation has been done. आज आप HIV वायरस के कांटेक्ट में आए तो HIV वायरस can remain latent, can remain in a prodrome phase, sleeping phase in your body for almost 10 to 15 years down the line. 10-15 साल तक आपकी बॉडी में जिंदा रहेगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा. सिर्फ इतना होगा कि जब वो आया आपकी बॉडी में, तो जिस तरह सर्दी जुकाम हुआ बस हुआ, थोड़ा बॉडी है, बस दैट्स इट. तो इसीलिए अगर आपकी कोई ऐसी हरकत आपने की है तो बहुत हुआ आपने कोई ऐसी हरकत की है which makes you vulnerable and the next day you land up into fever, there are chances you have contracted HIV. समझ में आ गया? ओके. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड्स, अच्छा, इनिशियल इन्फेक्शन जो मैंने बताया आपको एक्सप्लेन किया. नो स्पेसिफिक, अ बेसिक वायरल साइंस एंड सिम्पटम्स. रनिंग नोज, हाई ग्रेड फीवर which subsides on its own, थोड़ा सी nausea, vomiting, that's it. समझ में आ गया? Then asymptomatic, जो मैंने कहा आपको, जैसे 6 months से 10 years तक के you may remain asymptomatic. कोई symptoms आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको AIDS हो. Okay. The third is AIDS-related complex. When actually AIDS portrays itself.
और इट इज लेबल्ड एज एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अभी आपको पता है मलेरिया का फीवर कैसा आता है, आपको पता है डेंगू का फीवर कैसा आता है, आपको पता है टाइफाइड में क्या होता है, बट यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, पेशेंट विल कम अप विद रिकरेंट डायरिया, बार बार पेट खराब हो, आप डायग्नोस कर सकते हो, आप तो बोलोगे इसको बार बार टाइफाइड हो रहा है, बाहर की चीज ज्यादा खा रहा है, he or she may land up में भी समझ लो मेरे डॉक्टर साहब बहुत वेट लॉस हो गया, फीमेल आ रही है बोल रही डॉक्टर साहब बहुत वेट लॉस हो गया, अच्छा यू माइट बी ऑफ द व्यू कि शायद ये डाइटिंग कर रही होगी, बट सडन वेट लॉस इज नेवर अ गुड साइन इवन इफ यू आर डाइटिंग। सडन वेट लॉस सारी बड़ी बीमारियों में भी होती है, सारी बड़ी बीमारियों में होती है, एग्जाम्पल कैंसर, ट्यूबरक्यूलोसिस, एड्स, बुलिमिया नर्वोसा, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, बस ये 4 डिजीजेस है जिसमें 4 डिजीजेस ऐसी है जिसमें अचानक सडन वेट लॉस है। समझ में आ रहा है? तो सडन वेट लॉस, एड्स, अगर सडन वेट लॉस, व्हाट डू हाउ यू डिफाइन अ सडन वेट लॉस? मोर देन 6 kg per month, because I'm 10% of your body weight, एक एवरेज 60 kg का वेट आप लोगों में होगा, एवरेज 60 kg, तो इसका 10% अगर आपका एक मंथ में गया, if you are 100 kg तो 10 kg अगर 1 मंथ में गया, if you are 80 kg 8 kg 1 मंथ में गया, तो it is abnormal, even if you are dieting, that is not an achievement for you. You may land up into certain endocrine disorder. I have a patient, my relative, he was on diabetes, if I right, for 1 year almost. उनका waist size was 44. After 1 year of dieting, he landed up at 34, 10 inches come over. But he was rewarded with diabetes. He landed up into diabetes. तो जो लोग weight loss करना चाहते हैं, please approach a good doctor, dietitian, and a good doctor, rather than binging yourself. ठीक है? अच्छा, एंड स्टेज एड्स, एंड स्टेज एड, बेटा क्यों मैंने आपको बात भेजा पता है? आपने गलत पॉइंट पर हंसे, व्हाटएवर, आपको कुछ और जोक चल रहा होगा, आई नो यू गाइस। AIDS end stage. As I said, AIDS open not only doors but also windows for all sorts of infections. The things which will not even give you rhinitis, the bacteria which will not even give you URTI, upper respiratory tract infection, will give an AIDS patient a frank pneumonia, जिसकी वजह से आपको छींक नहीं आएगी ना, जो बैक्टीरिया की वजह से, जो वायरस की वजह से, उससे एड्स के पेशेंट को निमोनिया होता है, एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तो हाईजैक हो गई है, बैक्टीरिया कोई जा रहा है अंदर, बैक्टीरिया को किल करने के बजाय एचआईवी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? नींद आ रही है बेटा? एचआईवी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपका सारे टी सेल्स उसके एचआईवी के अंदर है। समझ में आया? तो एंड स्टेज में लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब क्या? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब क्या? The bacteria takes a good opportunity and gives you serious diseases. ठीक है? Kaposi sarcoma, a special type of cancer, only and only seen in HIV patient. जरा देखना कभी कापोसी सार्कोमा के पेशेंट, आप करीब जाना पसंद नहीं करोगे।
और HIV के पेशेंट्स अगर आप गूगल आउट करोगे तो ऐसे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कभी हील नहीं होते. You will land up into a boil मतलब हाँ हाँ फोड़ा या फोड़ी, वो हील नहीं होगा. इतना खराब हो जाएंगे टिश्यूज कि you will actually see insects running out in that hole. This is HIV end stage. क्या आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, एक बैक्टीरिया तो किल हो रहा है लेकिन दूसरा बैक्टीरिया स्टर जो है, समझ में आया? Diagnosis of HIV. How you will diagnose an HIV patient? सबसे पहला हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री. अभी आपके पास कोई ड्राइवर जा रहे, ड्राइवर्स, व्हाई आई एम लेबलिंग आउट ड्राइवर्स, क्या क्यों? Why I am labeling out ड्राइवर? क्योंकि there are certain truck drivers who remain out of their homes and home city for days together. For days together. मतलब अभी घर के बाहर रहते हैं, their activity, their sexual activity, they may land up into some sort of other relationship. Yes or no? Suppose you landed up into Canada for studying, for studies. You are away from your parents. You are away from your family. And you guys are prone enough to land up into unlawful sexual contact. Except this fact, आगे का जो टॉपिक है वो यही प्रवचन पूरा सुनना है एक घंटा. Adolescence. So, why we are teaching you AIDS? हम डरा रहे हैं आप लोगों को? Prevention is better than. समझ में आ गया? अच्छा. How you will diagnose a patient? सबसे पहला history. Suppose आपका नाम मानस is a doctor, pathologist, MD path. उन्होंने एक पेशेंट का कलेक्शन लिया, ब्लड कलेक्शन लिया, और उनको वो निडल लग गई. तो अभी ये हिस्ट्री अगर ये दे रहे हैं, दिस इज अ पॉजिटिव हिस्ट्री टुवर्ड्स HIV ना, ये शायद गलती से ही सही ही कॉन्ट्रैक्टेड HIV. तो अभी ऐसी चीज के लिए आप क्या करोगे? दिस इज नॉट यूर कॉन्टेक्स्ट. क्या करोगे अगर हो गई, गलती हो गई, somehow something happened in your life, but you realize that it was wrong and you may contract HIV, तो क्या करोगे? सपना लेके बैठ जाओगे? The first thing which you will do is go to a local PHC, primary healthcare center. Bhiwandi में it is IGM. There we have a separate entity, a separate course which handles HIV and AIDS patient. There they will give you PEP, post exposure prophylaxis. मानस को पता नहीं है वो पेशेंट जो आई थी या आया था इज HIV पॉजिटिव और नॉट, क्योंकि HIV के टेस्ट अगर आप कराओगे, ब्लड टेस्ट, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, तो उसको 7 to 8 डेज लगेंगे पॉजिटिव आने के, और 7 to 8 डेज आप, ये गोल्डन पीरियड है. तो इसमें ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि अगर इवन दो इफ यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड HIV तो उसका वायरल लोड कम रहेगा, एक दो वायरसेस हो गए, तो ऐसे एंटीवायरल दिए जाते हैं कि अगर है तो किल हो जाए. बट दे आर वेरी हार्श, वेरी हार्श मेडिसिन. 7 दिन खाओगे तो 7 महीने तक उसके साइड इफेक्ट्स हैं, इतनी हार्श मेडिसिन. बट इट इज अवेलेबल एनीवेयर इन एनी प्लेस, जिसको हम बोलते हैं PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस.
Okay, very good. Now I can go on. Off करना है, AC बंद नहीं है. Okay, आगे देखो आप लोग. Diagnosis of HIV. The first thing that we saw was history. Fan बंद करना है बेटा. Fan बंद करना है. Diagnosis is based. मानस बेटा fan बंद करना. फिर आगे से बस. First thing which we saw की history. Manas का history was very inclining towards HIV. Now we can do certain blood investigation, whereby we use a technique of ELISA, enzyme linked immunoabsorbent assay. अब ये क्या करता है? It never detects HIV virus per se. HIV को डिटेक्ट नहीं करेगा. HIV के अगेंस्ट जो बॉडी में एंटीबॉडी बनाई है या बॉडी ने कुछ रिएक्ट करके कुछ एंजाइम बनाया है तो वो एंजाइम को डिटेक्ट करेगा. समझ में आया? एलाइजा विल नेवर डिटेक्ट एचआईवी, वायरस को नहीं ढूंढेगा, लेकिन वायरस के अगेंस्ट बॉडी ने अगर कुछ बनाया है, बीट एन एंजाइम, बीट एन एंटीबॉडी, तो उसको ढूंढेगा. समझ में आ गया? सेकेंड इज वेस्टर्न ब्लॉट. फर्स्ट एनकाउंटर में भी ऑलवेज डू एलाइजा. अगर एलाइजा नेगेटिव है, दैट डजंट मीन यू आर एचआईवी नेगेटिव. टू कंफर्म वी डू वेस्टर्न ब्लॉट. ठीक है? देखो लिखा भी है, इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट एनी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट. क्योंकि अगर सपोज मैं कह रहा हूं मानस, डोंट टेक इट पर्सनली, मानस इज एचआईवी पॉजिटिव. हाउ ही इज एचआईवी पॉजिटिव? ही इज पॉजिटिव बिकॉज़ ऑफ एलाइजा. तो मैं उसकी पूरी जिंदगी, मेरा तो उसे बोलना है कि मानस इज पॉजिटिव. इट्स 3 वर्ड्स हैं. 5 seconds, few seconds has hold your life. समझ में आ गया? तो you may find it very funny and easy, आप लाइफ में चलता है, बट ठीक है 60 years में आप बचे कितनी जिंदगी. But moral of the story is, it is not just you, it is not just your age. 50 साल के बाद भी कुछ करने से पहले ये सोचना. ठीक है? और क्या है? अच्छा, routine screening must be done for blood donors, organ donors. Some are very keen to donate blood. ऐसा एक पेशेंट था मेरे पास, पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. उसने ब्लड डोनेट किया एंड ही लैंडेड अप इनटू हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव. डोनेट किया कैसे? उसने, उन लोगों ने सिरिंज रीयूज कर दिया. अब वो तो वापस इधर आ गया. इधर आने के बाद उसको पता चला कि एचपीवी पॉजिटिव. तो कितना संभल के कदम रखना पड़ेगा ना. चलो, पेशेंट्स अंडरगोइंग हेमोडायलिसिस and females in high risk group who are pregnant or contemplating pregnancy. That means if you are expecting baby, otherwise अब ये सारे हॉस्पिटल्स का रूल है, if you are going on the surgeon's table, ट्रिपल एच करके जाना. ट्रिपल एच में हेपेटाइटिस, एचबीएसएजी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये तीनों चेक किया जाता है, वरना आपकी वजह से सर्जन को हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए अब तो रूल हो गया है कि अगर इफ यू आर गेटिंग एडमिटेड, आप लोग बोलते हैं डॉक्टर फुजूल का ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा, कितना महंगा करवा लो, इसलिए कर, आपकी वजह से और दूसरों की. आप यहाँ पर कितने लोग? ऑलमोस्ट 100 नहीं, 80, 60, 50, कितनों ने कराया कभी एचआईवी? कितनों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? रेज ऑन हैंड.
को अपना ब्लड ग्रुप स्टेटस नहीं पता है, तो एचआईवी स्टेटस बताओ। एनीवेज, चलो चेक योर ग्राफ, अभी आपका काम रिवीजन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मैं सब तो कंप्लीट कर दिए, एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा। You want me to revise this? Yes. 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 No. कितनी बार रिवाइज किया मैंने इसको क्लास में? आप लोगों की क्लास में 6 टाइम, इन लोगों की क्लास में 3-4 टाइम, और इन लोगों की क्लास में ऑलमोस्ट, इन लोगों की क्लास में 7 टाइम तो किया ही होगा। बेटा गाना नहीं गाने वाला, नहीं तो का प्रोग्राम बोलो कहाँ ट्रोपोसोइड्स। चलो एक बार रिवाइज करें, और बहुत लोगों की भी बाकी है। Okay. Malarial parasites, the cycle occurs in 2 phases, one in human and one in mosquito. Whenever an infected female Anopheles mosquito bites an healthy individual during the blood meal, it releases dash into the bloodstream sporozoids. These sporozoids may either travel to the liver or may remain in the blood. If it goes into the liver, there are 2 chances. It will land up into a dormancy phase, which is called as hypnozoid, which is responsible for recurrence of malaria, or it will convert itself into hepatic schizoid. This hepatic schizoid will be released from the liver and will attack your RBCs. Within the RBC, merozoid, this schizoid will convert itself into merozoid, tropozoid, and then schizoid. And the cycle will continue until and unless a major chunk of your erythrocytic schizoids have been accumulated. Erythrocytic schizoids have been accumulated within the RBC. Once sufficient amount of erythrocytic schizoids have been accumulated, the RBC will rupture. The RBC will rupture. The rupturing of RBC will release the erythrocytic schizoid, which is capable of infecting new RBCs. Yes or no? ये तो एक साइड में कर दो. Second thing, this erythrocytic schizoids differentiates itself into male and female gametocytes, microgametes and macrogametes. That's it. Now, during the blood meal, a healthy mosquito takes up this male and female gametocyte. Now the cycle starts in the mosquito's body. Within the mosquito, this male and female gametocyte will fuse, macrogamete and microgamete. Now there are microgamete. So this is microgamete, this is macrogamete. Will fuse to form zygote. This zygote will travel up to the gut, convert itself into ookinase, which will penetrate into the gut wall and form oocyst. That oocyst will come back, rupture, release the sporozoid. This sporozoids will travel to the salivary glands of the mosquito. So whenever this mosquito will hit any other healthy individual, it will release sporozoids into the bloodstream. Okay? So this is your hepatic stem, merozoids, erythrocytes, tropozoids, gametocyte, microgamete, mosquito membrane. ठीक है, याद रहेगा, पूछे जाएगा. Which of the following causes filariasis in human? Filariasis. B. Option B. क्या है option? हाँ? Ascaris lumbricoides causes ascariasis. Plasmodium vivax causes malaria. Fuchsiaria bancrofti causes filariasis. While Xanthamoeba histolytica causes amoebiasis. Fuchsiaria bancrofti is transmitted to human body by yes. A anyone? B anyone? C? B?
तो सी के लिए रेज योर हैंड ना। स्टेबलाइजेशन करवाना है। ए बी सी डी ए, अरे बोलो सर। आंसर बोलो। अगर इन्होंने गलत आंसर दिया पूरी गर्ल्स को पनिशमेंट मिलेगा। आंसर इज she is representing you guys. If you want, help her. Is it C? Yes. The answer is C. उन्होंने B बोला था मॉस्क। Anyways, कहीं पर भी आया तो याद रखना it is always female मॉस्क। Mansoni did, Tulek did, it is Egyptian did and offense. अभी boys की तरफ है। Identify and label the given diagram structure of HIV virus. चलो कौन आएगा? Girls. सब टेक्स्ट अभी पढ़ा है चाहिए। Stand up, stand up. If he fails, सारे boys को punishment. Stand up. Okay, the punishment for boys is write the chapter thrice. Otherwise, दूसरे boys को बेटा last time. वो भी पीछे देख रहे हैं। You don't have answer. Keep standing. What is it? ये क्या है? उसको नहीं दिखेगा। What is this? Better is. What is this? This is RNA. This is voice की तरफ से बेटा आ गया। This is reverse. He is telling reverse transcription. Correct है? Correct answer is reverse transcription. This is capsid protein. This is बेटा इधर आके बैठ जाओ। बहुत शौक है ना? आ जाओ। हाँ? This is GP41. This is GP41. Yes. This is जाओ बैठ। ठीक है? Previously asked question. Very easy. मैंने 3 आइटम 1 मॉस्किटो बनाएगा। बेटा Bhiwandi, you come at the highest then. Highest, ना? 3 antigen you have to remember. Capsular K, somatic O, flagellar H. एक ऐसे पोटैटो जैसा कुछ बना देने का, ऐसे इनसे बाहर निकालने का, that's it. वो आपका साल्मोनेला टाइप। And list the various types of cancer. Raise your hand if anyone knows this. This will fetch your dairy milk. Leukemia. बस कार्सिनोमा,
Sketch and label the structure of HIV. Preventive measures बता दो मुझे, क्या करोगे? Apply Odomos. रोज 2 बार नहाओगे तो मलेरिया नहीं होगा। इंग्लिश में बोलो ना, आंसर लिखना है। इन सराउंडिंग, वो तो बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं, नेट, वेरी गुड। अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ वाटर। हॉस्पिटल गंदा पानी पिएंगे तो उसमें मलेरिया हो जाएगा। See, whether you are writing any preventive measure, you have to target on 3 areas. सबसे पहला वेक्टर। वेक्टर के लिए आप क्या कर सकते हो? वेक्टर को ग्रो होने ही मत दो ना। तो कहाँ वेक्टर ग्रो होता है? गंदे पानी में। अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। अगर एक्यूमुलेट हो गया तो क्या करोगे? ग्रो गैम्ब्यूसिया फिश इन दैट वाटर। गैम्ब्यूसिया फिश which feeds on the larvae of malaria, plasmodium. ऐसे फिश ग्रो करो। फिर भी अगर मॉस्किटो बढ़ रहे हैं तो अपने खुद के लिए क्या करोगे? अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स। इजी? साइन एंड सिम्टम्स तो आपको पता है। फीवर तो आएगा ही। फीवर के 3 स्टेज और फिर वो आर्थ्राल्जिया, मायाल्जिया, हीमोग्लोबिनूरिया। Name the process in which tumor successfully spreads to other part of the body, grows and destroy healthy tissue. Answer is the correct answer is metastasis. Name the process बोला है ना, process के लिए metastasis आना चाहिए। अगर name the tumor आता तो वो malignant। चलो, let's start with the second part of the story. Stand up everyone. Raise your hands. Left hand down. Right hand down. Sit. Raise your hand. Raise your hand. Hand. Stand up. Sit. And sit. Stand. Sit. File to get. Now come to the pravachan part of the chapter. A very serious topic which I address very in detail. Adolescence. आप जिस एज में हो, we also label it as teenage, that is 13 to 19. Yes or no? Yes. But your textbook says 10 to 19. Adolescence एक ऐसी एज है जहां पर आप बच्चे नहीं हो, ना ही आप बड़े, ना इधर ना उधर, you are other. बच्चे हो, बच्चे हो, हो? Should I comment something? You'll start crying otherwise. अच्छा, नहीं पता। ना बच्चे रहने हो, ना बड़े हो गए। You may feel you are an full adult, but you are not. See, this
This is a part, this is a point of your life where your future will be decided. How you develop yourself, how you develop your personality, how you develop your habits, how you select your friends, what are your wants and what are your needs. Because अगर आपकी ये लाइफ खराब हो गई तो आगे की पूरी लाइफ will be zero, 100% zero. I can give you thousands and thousands of examples of such cases. इसीलिए moreover from academic point of view, this is important for your survival, I would say. So what is an adolescent phase? Adolescent phase is a transition age. Abhi, let's just compare it rather than landing up into the text part. Let's just compare yours. Anyone voluntarily wants to stand up? Ozan, stand up. Beta, stand up. Stand up. बाजू में stand up. क्या डिफरेंस है चारों? हाइट ओके. फौजान को देखो. यस. बॉडी स्टेचर. फेशियल हेयर. यस और नो? हाँ या ना? This is a point where you develop secondary sexual characteristics. Example, the females will start their menstrual cycle. They would have started much before. Because normal age is 13 to 20. But nowadays the menarche is receding towards 10 or 9. Anyways, menstrual cycle, which was absent, all of a sudden it starts. The males start getting viable spermatozoa in their semen. Now you are developing your body in terms of your sexuality. You can develop facial hair in case of boys. You develop axillary hair, that is armpit hair in both the cases. You develop pubic hair in both the cases. You develop body hair in case of males. You develop facial hair in case of males. Development of breast in case of females. Regression of breast in case of males. Change in voice in case of males. Yes or no? Sudden spurt in height in case of males. Widening of shoulder in case of males. Widening of hip in case of females. ये सारी चेंजेस आप लोग नोटिस कर रहे होंगे आफ्टर योर 10th. ऑल ऑफ अ सडन आपकी हाइट बढ़ गई. यस और नो? So adolescence is transition, which is putting you on the pathway of your adulthood. You are not an adult right now. You are not at all 18. है ना? So adolescence is a transition stage of physical and mental development. Physical तो मैंने बता दिया. अभी mental पे अगर मैं बात करने चाहूँ, तो 10th में आपकी mentality क्या थी? Anyone wants to share? No one will laugh. Don't go. हाँ बोलो. अच्छी हो गई. Okay. 10th में बेटा क्या सोचते थे आप? वो बता. You were more engrossed in studies. Sit. Your first and primary comfort zone was your family, but now it is not. It is very harsh, a bitter truth, but it is. Initially, your Superman was your father, your Superwoman was your mother, but now your Superman is some Superman from the fictional stories, or your friend, or some places. 10th standard में, 7th standard में, 6th standard में, you were not
hairstyle. But now you pay extra for a specific hairstyle. You want a specific brand t-shirt to go somewhere. Only Adidas shoes. Only Nike shoes, sandals. Only US polo shirts. Only Zara sandals. Yes or no? Now you are becoming brand obsessed. You know why? Now you are becoming attention seekers. Everyone. This is not for any specific one. Everyone. You want people to look at you. Yes or no? Somewhere in your mind, somewhere in your heart, you are becoming attention seeker. You giggle, you laugh in middle of the lecture. Why? You want attention. You want someone to look at you. You crack lame jokes so that people should laugh. Yes or no? You are wearing a specific brand watch. You are wearing a smart watch. You want people to appreciate it. Why? This because you are in this phase of life where you want attention, and this is adolescence. 6th standard में ऐसा था. Now the interest is shifting from studies to extracurricular activities. I remember आज ही शायद जब से प्लास्टिक का पिस्तौल ईट पे खरीदना छोड़ दिया है तब से जिंदगी का डाउनफॉल स्टार्ट है. ये आज ही मैंने कहीं तो देखा. I don't remember that. सुबह में मतलब पहले you want आपको क्या चाहिए था? डॉक्टर सेट. जब बच्चे थे 3rd 4th में डॉक्टर सेट जिसको चाहिए था. पावर रेंजर्स के पूरा कलेक्शन चाहिए था. WWE के कार्ड्स चाहिए थे आपको. पोकेमोन सारे चाहिए थे. और अभी you want Zara के सैंडल्स. नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है ना. आपकी प्रायोरिटीज बदल गई. अब आपकी सोच पे आते हैं. इनिशियली यू वर एनग्रोस्ड ओनली इन स्टडीज. आपके जो पुराने फ्रेंड्स थे बस वही फ्रेंड. नाउ you have new friends. A harsh reality they are saying nothing more than that. Yes. We are almost. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम आपके और मेरे बीच में 10 साल का डिफरेंस. Big difference. I still feel I'm just 2-3 years older than you. Again, it is almost 10 years. We're talking on age gap as well. Anyways. Now you want justification. पहले आपको परियों की कहानी, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, अभी भी लोग हैं बैटमैन के पीछे पागल हैं. कैप्टन अमेरिका के पीछे अभी भी पागल है. पहले आपकी जो बेस था वो इट वाज मोर ओवर फिक्शनल. अलादीन फिक्शनल. Now you want justified movies. You want justification for everything. है ना? आप देख रहे हो यार क्या ठीक है. है ना? Now you cannot accept. Now why? Because your memory, your intelligence, your pattern of thinking is moving towards a concrete pattern. You want justification for everything. If I am saying don't do this, justify it. आप चाहते हो हर चीज के लिए. Yes or no? अभी आपको कोई इससे कहानी उसकी कहानी सुनाए बोर होगा. लेकिन just imagine your 4th standard का life where you actually enjoyed these stories. समर वेकेशन में दोस्तों के साथ बैठ करके घोस्ट की स्टोरीज सुनना. This was a normal routine for everyone. But now what do you feel? यार हमसे अच्छे तो घोस्ट. घोस्ट से गए गुजरे हो गए इंसान. Now you feel like this? Yes. Your thinking pattern is changing towards a concrete pattern. पहले आपका favorite
person was your dad, your mom. Now your favorite person is your friend. Initially आपके एक रबर भी टूटता था तो you used to complain it to your mother. और आज बाइक से बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन आपके पेरेंट्स के कानों तक हवा भी नहीं जाने देते. Nothing to laugh at. Things to ponder on. Bad words. पहले एक बैड वर्ड बोलने पर खुद को गिल्टी फील करते, आज मजाक में बैड वर्ड्स बोलते हैं. एंड व्हाट यू फील, अरे यार हम तो अभी जवान हो गए, ये तो हम नहीं बैड वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, गाने कौन यूज करेंगे, हमारे लिए बने. सिगरेट, क्यों सिगरेट स्मोकिंग आप में आई, क्यों उल्टी सीधी आदतें आप में आई. आदमी जैसा जिन लोगों के बीच में रहता है वैसा बन जाता है. आपके फ्रेंड स्मोक करते थे, किसी एक ने बोला यार तो अभी तो जवान हो गया है, देख गाड़ी आ गई तुझे. एक बार ट्राई कर, वो ट्राई करने में पहले कुछ गलत काम करते थे तो उसको छुपाया जाता, आज उसको स्टेटस स्टोरी और स्नैपचैट स्टोरी सुनाते है ना. पहले कुछ गलती करते थे तो सब दुनिया भर से छुपाई जाती, लेकिन आज वो गलतियां करके हम स्नैपचैट पे स्टोरी डालते. ये एक रियलाइजेशन पार्ट है आपकी लाइफ का, जो अभी आप नेक्स्ट हाफ आप चलोगे, which you will actually miss after 10 years. 10 साल के बाद मेरे एक एक वर्ड्स आपको याद आएंगे और आप कहीं कॉर्नर में बैठ के बस एक स्माइल देकर के आगे बढ़ोगे, लेकिन एट दिस टाइम यू विल नॉट रियलाइज. आपको फील हो रहा होगा सर बहुत बोल रहे हैं, एग्जाम में नहीं आने वाला है फिर भी इतना बोलने वाले, बट दिस इज वेयर यू नीड अ रियलाइजेशन. नेक्स्ट पार्ट. The entire stage of adolescence is divided into three: early, middle, and late. Early is 10 to 14, initial 5 years. Middle is 15 to 17, which is the utmost important area, and the late period 18 to 19. If you will see, in early period 10 to 14 years, you start developing secondary sexual characteristics, as in जो मैंने बताया, rapid physical growth, अचानक हाइट बढ़ गई, concrete thinking, defining boundaries of dependence and independence. पहले आप बोलते थे कि मेरा दोस्त काम कर लेगा, मेरे लिए आप फ्रेंड से पेंसिल्स मंगाते थे, लेकिन नाउ यू वांट मेरा काम है मैं खुद करूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं. आई एम माय ओन बॉस. यस और नो, है ना. सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन टर्म्स ऑफ एनी टाइम, in terms of any faculty, developing body image, especially of opposite sex, development of intense friendships, seeking to counter instability and evaluation, seeking to counter instability and evaluation. सामने वाला जज कैसे करता है, यू आर वरीड अबाउट दैट. यार मैं ऐसे बोल दिया उसके सामने, क्या सोचेगा वो. ये सब ना. Middle period, almost all the secondary sexual characteristics have been developed. Growth slows down 95%. अभी एक बात आपने सुना होगा, दाढ़ी आ गई हाइट भी बढ़ने वाली, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया हाइट भी बढ़ने वाली, ये सुना होगा ना. Once you hit the puberty, in some puberty, development of secondary sexual characteristic is corroborative with your puberty. Same है, puberty को hit किया हाइट नहीं बढ़ने वाली है, मुस्टैचेस आ गए हाइट नहीं बढ़ेगी. आप समझ में आ गया. Thinking is abstract, concrete thinking, sense of leadership, हाँ very important. किसे किया, मैं. कौन हो आप, मैं हूं, मी. है ना, सिर्फ यही आ गया सब लोगों को.
मैं और मैं preoccupied with romantic fantasies, very common now. 10th standard में you are not even aware about any sexual habits. Now you are exploring yourself with the help of your internet friend and other friends and all this stuff. Now your selection and collection of memes have been changed from basic anime to any other song or something. Ability testing to attract opposite sex, peer influence. मैंने कहा कुछ करते हो attention seeking, क्यों करते हो? लोग देखिए, कुछ अपने कुछ पराए, कुछ बॉयज कुछ गर्ल, देखे ना मुझे, देखो मैं कितना अच्छा बात कर रहा हूँ। सर ने ऐसे बोला, मैं तो फौरन बोल दिया, है ना? यू फील आई एम वेरी स्मार्ट, मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों? वो लोग हंसा रहे थे, मैंने क्या किया? है ना? कहां से आया? दिस इज नॉर्मल फॉर एडल्ट्स, बट इसको कंट्रोल करने आना चाहिए। सब में है, लेकिन कंट्रोल करने आना चाहिए। एंड द लेट पीरियड जो अभी बहुत करीब है आपके, इसीलिए आपको इस टर्म में पढ़ाया जा रहा है कि वंस यू लैंड इनटू द लेट पीरियड, डाउन, खत्म, फिर वही आपकी लाइफ है। ऑलमोस्ट यू आर 17,